So a very good morning to all students and welcome to my class Edufly JEE-NEET. So like in previous class I have discussed about like in plant kingdom algae, bryophytes and pteridophytes. Fine. So two topics were left and these were Gymnosperm and Angiosperm. So let's discuss about Gymnosperm today. Fine. So what is Gymnosperm? The name itself says gymno means naked, sperm means seed. That is naked seed. Fine. And these are the characteristics for Gymnosperm. ठीक है? What happens in Gymnosperms is that seed and embryo formation takes place, but there is no formation of fruit. Fruit formation नहीं होता basically in Gymnosperm. Fine. Angiosperms will see and will compare between Gymnosperm and Angiosperms. Fine. Habitat where they are found. They are found in cold regions. They are found in कोल्ड रीजन्स, मतलब बहुत ठंडी जगहों में पाए जाते हैं. जैसे कि इन इंडिया इफ इट्स फाउंड इन हिमालय माउंटेन्स. दे आर फाउंड इन हिमालय माउंटेन्स. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आई एम डिस्कसिंग विद यू बिकॉज यू शुड नो व्हाट इज जिम्नोस्पर्म. द नेम इटसेल्फ सेज दैट इट्स नथिंग बट नेकेड सीड. फाइन. इन इंडिया वेयर इट इज फाउंड इन हिमालय माउंटेन्स. they are vascular plants. That means xylem and phloem tissues are present in case of Gymnosperm. Fine. Xylem and phloem, just remember they are vascular plants, but there is always an exception. Exception is that xylem doesn't has vessels and phloem it lacks companion cells. These are the exceptions you have to remember. See, and these are the examples, a very important example in case of Gymnosperms, that is pines, firs, spruces, redwood, cedar and junipers. Fine. So these are the very few and important examples you should remember in case of Gymnosperm. These are the important examples. There are many more examples for Gymnosperm. I have given you the very important ones which you have to remember in case of Gymnosperm. See, these are some facts related to like Gymnosperms. This is the very important notes which I have given you. See, Zamia Pygmea is the smallest gymnosperm. You have to remember because these are some informative type questions which you might get on exam. Zamia Pygmea is smallest gymnosperm. Redwood tree is largest gymnosperm. Very important from NEET point of view. Just remember these two names. It's very important. There's nothing to know more about it because these are the information which I'm giving you. Characteristics which I have discussed is fine and more than enough. See about cycas. See, what happens in cycas is that the roots of cycas basically it harbors cyanobacteria like nostoc and anabena. I have already discussed about cyanobacteria. Just open my notes and see. These are the two cyanobacteria that helps in the root like nitrogen fixation and all. Fine. These roots are much branched. These roots, the roots of cycas, they are much branched and superficial, and so they are called what? Coralloid roots. They are called coralloid roots. Fine. The tallest gymnosperm. This also you remember here given this star mark. Tallest gymnosperm is sequoia. That is redwood tree. Tallest. Fine. Cycas. Cycas is the living fossil. Cycas I told you here, no? It's a living fossil. And also one more is there. Ginkgo biloba. This is also a living fossil, but that is exists from several millions of years during the Triassic period. Which period? Triassic period. We'll learn about this all Mesozoic era, Triassic era, na? In case of evolution. Like in evolution, I'll go into details of this Triassic period and all, na? Like right now we are studying about plant kingdom, so just focus on Gymnosperms right now. So these are the important facts you should know about studying the Gymnosperm. Fine. So after this I'll go for like a sexual reproduction in case of Gymnosperms. How does the life cycle of Gymnosperms takes place in case of that plants, those who shows the properties of Gymnosperms. Fine. So now let's discuss about the sexual reproduction in case of Gymnosperms. How does it takes place? See, plant body is sporophyte, that is diploid. Means in case of like sexual reproduction Gymnosperms, there is always a diploid number. ठीक है, twice n होता है. All Gymnosperms are dioecious. That is male and female plants are separate. That means मेल और फीमेल प्लांट अगर सेपरेट होते हैं उसको डायोशियस बोला जाता है ना.
दे आर नॉट मोनोशियस, ठीक है. डायसियस, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर. सी पाइन इज मोनोशियस. पाइन प्लांट में क्या होता है, मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, दे आर इन द सेम प्लांट इटसेल्फ, ठीक है. रिप्रोडक्शन इन सेम प्लांट होता है, लेकिन इनका क्या है, मेल एंड फीमेल जो है सेपरेट है, ठीक है. एट मैच्योरिटी सर्टेन लीव्स गेट्स मॉडिफाइड इनटू स्पोरोफिल्स. जब मैच्योर्ड हो जाते हैं ये प्लांट तो कुछ लीव्स जो हैं वो मॉडिफाई होके स्पोरोफिल्स फॉर्म करते हैं. और जो स्पोरोफिल्स क्या है, कंपैक्टली, बहुत कंपैक्ट अरेंज्ड होते हैं, ऐसे इस तरह बहुत बहुत ऐसे 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 करके ऐसे कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं इन कोन्स, ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस. हेटेरोस्पोरस, हेटेरो मतलब डिफरेंट, अलग, है ना. होमो मतलब सेम. तो हेटेरोस्पोरस मतलब क्या है कि स्मॉलर माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर मतलब मेल और मेगास्पोर मतलब फीमेल, मतलब टू, बेसिकली सिंपल साइंस में कहा जाए तो दैट इज it contains two spores, one is male, other is female, one is microspore, one is megaspore. Fine. See, sporophylls, it contains sporangia and then it forms, जैसे कि whatever I have written I have illustrated in the form of diagram. Diagrammatically you will understand much more. Fine. Sporophylls, it will contain sporangia. पता है स्पोरोफिल में स्पोर होंगे. स्पोरेंजिया क्या होगा, स्पोर मदर सेल्स होगा. देन इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल फॉर्म स्पोर्स, और उसी स्पोर से दो स्पोर्स निकलेंगे, एक माइक्रोस्पोर होगा, एक मेगास्पोर. वन इज मेल एंड द अदर इज फीमेल. सो सिंपल, राइट. सो दिस इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड more is yet to be discussed. So be patient and see my lectures, just watch my lectures and understand whatever I am telling you about the plant kingdom, and whatever doubts you have you can contact me, you can email me, you can WhatsApp me. I'm happy to help you in whichever way I can. So let's see about some important points about the sexual reproduction in case of gymnosperms. चलिए बात करते हैं. Let's see, and I hope you are enjoying my lectures. Fine. So in case of sexual reproduction, megasporangium that mainly consists of a body called nucellus, that is nucellus, and it is protected by this is the outer covering which helps in the protection of megasporangium. This is integument. Fine. So this is integument. Megasporangium, it mainly consists of body called nucellus. This is the full body, and that is protected by integuments. Fine. Within nucellus, this is nucellus. Within nucellus there is differentiation of the megaspore mother cell. तो क्या होता है कि nucellus जो है उसी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल का डिफरेंशिएशन होता है. मतलब स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखेंगे. मेगास्पोरेंजियम कहा, मतलब मेगास्पोर मतलब मेल है ना, मेल मेगास्पोर में होता है ये, दैट इज मेगास्पोर. मेगास्पोर कहा, मेगास्पोरेंजियम में होता है ना. फाइन. बोथ मेल एंड फीमेल जो गैमेटोफाइट्स हैं, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये देखिए जो डायग्राम मैंने दिखाया, ये इंट्यूग्यूमेंट्स है, ये मेगास्पोरोसाइट है, ये माइक्रोपाइल है, जिस यहाँ से एंटर होगा. ठीक है. तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे मेगास्पोरेंजियम का कैसे डिफरेंशिएट होता है, कैसे फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म होता है, मेल कैसे होता है, मेल गेमेटोफाइट कैसे होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, वो हम देखने वाले हैं. स्टेप बाय स्टेप विल डिस्कस. फाइन. सो विल डिस्कस अबाउट स्टेप बाय स्टेप फॉर मेगास्पोरोफाइट ना. ठीक है, चलो देखते हैं, बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप. विल डिस्कस अबाउट इट. फाइन. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द गेमेटोफाइट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेसिकली दिस आर द स्टेप्स इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका कर रहे हैं हम, जिम्नोस्पर्म का. फाइन. सो देखिए क्या होता है, पहले क्या होता है, इट डिफरेंशिएट्स इनटू वन मेगास्पोर मदर सेल. वन मेगास्पोर, हम मेल का बात कर रहे हैं, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर ना. ठीक है, इट डिफरेंशिएट्स इनटू वन मेगास्पोर मदर सेल्स. उसके बाद इट फॉर्म्स बाय मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल्स हो गया. फिर टेट्राड. टेट्राड मतलब ऐसे चार फॉर्म होंगे, 1 2 3 4 टेट्राड होंगे, इसी को बोलते हैं टेट्राड. टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स विल बी फॉर्म्ड. देन क्या होगा, 1 2 3 तीन लीव छोड़ देंगे, मतलब डीजेनरेट मतलब खत्म हो जाएंगे. लीव बा खत्म हो जाना. ठीक है, खत्म हो जाना है. दिस 3 विल फिनिश, ओनली 1 रिमेन, सिर्फ एक बचता है. दिस रिमेन्स, अगर ये बचता है तो वो क्या करेगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर जो बचा वो क्या करेगा, रिपीटेड माइटोसिस, रिपीटेड बहुत सारे माइटोसिस सेल डिवीजन होंगे. उसके बाद इट डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट.
ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे मेगास्पोर मदर सेल से कैसे मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट हुआ, आपको समझ में आ गया। प्रोसेस वेरी इजी है। तो टेट्राड फॉर्म होगा, फिर उनमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक बच जाएगा तो वो वही जो बचेगा वही क्या करेगा, मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। ये सारे हमने गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट 2 पार्ट हम हर एक, जैसे कि पिछले मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबके डिस्कस किए ना, सब में मैंने यही डिस्कस किया ना, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट, कहाँ मेन बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है कि गेमेटोफाइट है, कहाँ से शुरुआत होता है, वेदर इट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक साइकिल, हैव डिस्कस्ड इट इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो। तो इसमें हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये गेमेटोफाइट का था, अब देखते हैं स्पोरोफाइट में कैसे होता है, कैसे काम करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमेटोफाइट हो गया, अब स्पोरोफाइट बात करते हैं ना, तब हम लाइफ साइकिल इसका जिम्नोस्पर्म का कंप्लीट करेंगे। सो नाउ लेट्स वी सी अबाउट स्पोरोफाइट, ठीक है। दिस वाज अबाउट गेमेटोफाइट, सो नाउ लेट्स सी अबाउट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या होता है, माइक्रोस्पोर एंड आर्किगोनियम। ये क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल है। तो देखो कौन क्या प्रोड्यूस करता है। ये माइक्रोस्पोर जो है मेल पॉलन ग्रेन वो स्टिमुलेट पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, इट विल रिलीज पॉलन ग्रेन, और वो पॉलन ग्रेन बाय विंड के थ्रू इट विल रीच टू द फीमेल इज आर्किगोनिया। फीमेल क्या होता है, दे विल प्रोड्यूस 2 to 8 आर्किगोनिया एंड बिकम डिफरेंशिएटेड एंड ईच विल फॉर्म 1 फीमेल गैमेट्स, एक फीमेल गैमेट्स फॉर्म करेगा, फाइन। एंड दिस 2 लाइक मेल एंड फीमेल बोथ विल फ्यूज एंड फॉर्म व्हाट, ज़ाइगोट। वेरी सिंपल, ये मेल है ये फीमेल है, ये पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा प्रोड्यूस करेगा, बाय विंड ये पहुंचेगा फीमेल की तरफ और फिर फ्यूज करके गैमेट ज़ाइगोट फॉर्म कर देगा। दिस वे द रिप्रोडक्शन कंटिन्यूज इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो यह रहा जिम्नोस्पर्म हो गया। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल कि जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कैसे होती है, उसको जस्ट हम एक डायग्रामेटिक व्यू में आपको समझा देंगे, विल गेट टू अंडरस्टैंड एंड वेरी क्लियर, फाइन। सो विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो लेट्स सी अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। So I have shown you very interesting diagram. I am explaining you what is life cycle in case of gymnosperm. Fine. तो देखिए first कहाँ से शुरू होगा, this. The life cycle will start from this independent sporophyte. Then second step it will forms male and female cone. ठीक है, ये male है ये female है. Then by meiosis cell division it forms microspore. This is male. Megaspore is female. ठीक है, then male will form male gametophyte. In case of megaspore female gametophyte what will they will release egg, ठीक है ना। तो मेल क्या रिलीज करेंगे, बाय पॉलिनेशन होगा ना उनका, पॉलिन्स जाएगा उनके, वो जाएंगे फीमेल के अंदर, ठीक है। तो ये फीमेल गैमेट है, एग रिलीज करेगा, मेल क्या पॉलिन्स। सो पॉलिनेशन होगा, तब क्या होगा, बाय पॉलिनेशन मतलब विंड के थ्रू और डिफरेंट सोर्सेस है पॉलिनेशन के। तो व्हाट हैपेंस इज दैट मेल विल एंटर इनटू फीमेल, फाइन। तो मेल एंटर करेगा फीमेल के अंदर, उसको क्या फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज दैट zygote with parent cone scale, yeah, after fertilization form zygote, then again mitosis cell division, and then it what happens is that embryo will form inside the seed. इसके अंदर embryo है, again by mitosis cell division independent sporophyte या independent spores will form, ठीक है। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, देखिए कंटिन्यूएशन है, शुरुआत यहाँ से हुई, it leads to like complete zygote and complete in the like plant, but in case after that again it can form independent sporophyte. तो cycle this will continue in case continuation alternation of generation continue होता रहेगा, ठीक है। तो life cycle of gymnosperm, this is the pictorial diagram. I hope you understand because it's very easy, step by step शुरुआत यहाँ से होगा, आके वापस ये continue हो जाएगा, यहीं से शुरुआत होगा, करते 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 वापस continue हो जाएगा, fine. Starting will be from here, from sporophyte. I told you ना, plant body in case of genus sporophyte twice n diploid number होते हैं ये, ठीक है। तो this was all about life cycle of gymnosperm. So with this I'll complete my today's class. It's about gymnosperm is completed. The last topic left is angiosperm. So we'll continue it in next class. I hope you enjoyed my class. So thank you so much. Thank you so much.